everyone. In this lecture, we will discuss the exercise 9.2 of Mathematics class 7. In this exercise, we will discuss the questions based on various operations on rational number. Question number 1, find the sum of following questions. See the first part of this question. Add 5 by 4 plus minus 11 by 4. Recall your knowledge. यदि हमें दो ऐसे रेशनल नंबर्स को ऐड करना हो, सम करना हो, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो समेशन के बाद जो रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा उसका भी डिनोमिनेटर वही होगा जो कि बाकी दोनों रेशनल नंबर्स का है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्वेश्चन द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स आर 4. So the denominator of the rational number which we find out after the summation of these two rational numbers is also 4. And then add the numerators directly. So 5 plus minus 11, it means it is equal to minus 6 by 4. यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 6 एंड 4 इज 2. तो यदि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें, सो माइनस 3 बाई 2 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर. नाउ नेक्स्ट 5 बाई 3 प्लस 3 बाई 5. जब भी हमें ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अगर उन्हें एडिशन करना हो, तो रिकॉल योर नॉलेज, हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उन्हें ऐसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में चेंज करना चाहिए जिनका कि डिनोमिनेटर सेम हो. अब उसके लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए? उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए एलसीएम. फॉर दिस पर्पज फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5. सो मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, and multiples of 5 are 5, 10, 15. So 15 is the lowest common multiple, means LCM of numbers 3 and 5. अब हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर्स इन दोनों रेशनल नंबर्स के 15 हो. फॉर दिस पर्पज मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशनल नंबर बाई 5 एंड मल्टीप्लाई सेकंड रेशनल नंबर बाई 3. सो दिस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इज 25 अपॉन 15 एंड दिस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इज 9 अपॉन 15. नाउ the sum of these two rational numbers have the denominator 15 and numerator is 25 plus 9. So it is 34 upon 15. Now repeat this procedure to all the questions. For example, minus 9 by 10 plus 22 upon 15. What is the LCM of 10 and 15? It's 30. अब तक आप लोग इतने क्वेश्चन देख चुके हो कि आप आसानी से निकाल सकते हो. So LCM of 10 and 15 is 30. Now convert this rational number into such a form that denominator is 30 and convert this rational number into such a form that denominator is 30. For this purpose multiply first rational number by 3 and multiply second rational number by 2. Then this one is minus 27 upon 30 plus, and this one is 44 upon 30. So now both rational numbers have denominator 30. So sum also has the denominator 30 and numerator is minus 27 plus 44. So 44 minus 27 is 17.
So the sum of these two rational numbers is 17 upon 30. Next, minus 3 upon minus 11 plus 5 by 9. We know that minus 3 upon minus 11 rational number can be written as 3 upon 11. So these two rational numbers can be written as 3 upon 11 plus 5 upon 9. The LCM of 11 and 9 is 99. So to convert denominators into 99, multiply first rational number by 9 and multiply second rational number by 11. Then first rational number can be written as 27 upon 99 and second rational number can be written as 55 upon 99. So the sum has denominator 99 and the numerator is 27 plus 55. So the answer is 82 upon 99. It is part 5th. Minus 8 upon 19 plus minus 2 upon 57. The LCM between 19 and 57 is 57. You can find out it. So to convert this 19 into 57, multiply the first rational number by 3. Then it is minus 24 upon 57 plus minus 2 upon 57. So the sum has the denominator 57 and numerator is minus 24 plus minus 2. So it is equal to minus 26 upon 57. So the answer of this question is minus 26 upon 57. Next is 2 by 3 plus 0. We know that कि यदि किसी भी नंबर में यदि हम 0 ऐड करते हैं then there is no change in the sum, means it is equal to 2 by 3. यदि हमें इसको रेशनल नंबर के ही कॉन्सेप्ट से देखना हो तो 0 कैन बी रिटन एज 0 upon 1. Now the LCM between 3 and 1 is 3. So to convert this rational number in such a form that the denominator has the number 3, so multiply numerator and denominator both by 3. So 2 by 3 plus 0 by 3, because 0 multiplied by 3 is 0. Now the sum has the denominator 3 and the numerator is 2 plus 0, so it is equal to 2 upon 3. So यदि किसी भी रेशनल नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो सम पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. नेक्स्ट इज -2 1 by 3 प्लस 4 3 by 5. इनको इम्प्रॉपर रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. -2 1 by 3 कैन बी रिटन एज -7 upon 3 प्लस 4 3 by 5 कैन बी रिटन एज 23 by 5. हमने ऑलरेडी देखा है कि द LCM ऑफ 3 and 5 is 15. To convert these rational number into such an equivalent rational numbers where the denominator is 15, for this purpose multiply by 5 in the first rational number and multiply by 3 in the second rational number. So
First rational number is minus 35 upon 15 and the second rational number is 69 upon 15. So the sum has the denominator 15 and the numerator is minus 35 plus 69. So it is equal to 34 upon 15. Question number 2 is based on the subtraction operation. Part 1. 7 upon 24 minus 17 upon 36. What is the LCM? LCM of 24 and 36 is 72. Now multiply first rational number by 3 and second rational number by 2 to convert denominators of these rational numbers into 72. So this rational number is 21 upon 72 and this rational number is 34 upon 72. So the difference is 72 is the denominator because these both rational numbers have same denominator 72. So the rational number which we obtain after subtraction of these two rational numbers also has the denominator 72 and the numerator is 21 minus 34. 21 minus 34 is minus 13. So the answer is minus 13 upon 72. Now second part. Before to start this second part of this question, recall the concept of additive inverse. Suppose A upon B is a rational number and minus A upon B is also a rational number. If we add these two rational numbers, then the sum is 0. Then A upon B is known as the additive inverse of minus A upon B and minus A upon B is known as the additive inverse of A upon B. This is the concept of additive inverse. Now A upon B minus A upon B is also equal to 0. ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कह रहा है? ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है कि यदि हम किसी रेशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्स का एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट आता है यदि हम उस एडिटिव इन्वर्स के एडिटिव इन्वर्स को यूज करते हुए ऑपरेशन को चेंज कर दें, एडिशन को सब्सट्रैक्शन में और सब्सट्रैक्शन को एडिशन में. रिपीट, minus A upon B is the additive inverse of A upon B. If you add a rational number with its additive inverse, then the sum is 0. अब इस additive inverse के additive inverse को यदि हमने एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन कर दिया, then the result is also same. मीन्स हम एडिटिव इन्वर्स का यूज करते हुए किसी रेशनल नंबर के एडिशन की प्रॉब्लम को सब्सट्रैक्शन में और सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम को एडिशन में चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. अब इस प्रॉब्लम को देखिए, -6 अपॉन 21, -6 अपॉन 21 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 6 अपॉन 21. और यदि हम इस नंबर को इस सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम में एडिटिव इन्वर्स से चेंज कर दें, देन दिस सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम इज चेंज इनटू एडिशन प्रॉब्लम एंड द रिजल्ट इज सेम.
So this problem can be converted into addition problem of 5 upon 63 plus 6 upon 21. Now take the LCM. LCM is 63. Convert the denominator of this rational number into 63. Multiply numerator and denominator both by 3. So this is 5 by 63 plus it is 18 upon 63. Now both have same denominator. So the result also have the same denominator 63 and the numerator is 5 plus 18. So the result is 23 upon 63. तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास में सब्ट्रैक्शन की जिसमें कि दूसरा टर्म भी नेगेटिव हो, जिससे कि आगे चलकर हमें ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये माइनस के साथ हम किस तरीके से डील करें, तो ऐसी प्रॉब्लम में आप उसको एडिटिव इन्वर्स का यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को आप एडिशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लीजिए, देन आपको ईजिली यू गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट, देयर इज आल्सो द सिमिलर सिचुएशन लाइक द पार्ट 2, -7 upon 15. So use the concept of additive inverse. -6 upon 13 plus additive inverse of -7 upon 15 is 7 upon 15. Now the LCM of 13 and 15 is 195. So the LCM is 195. Convert these denominators into 195, multiply by 15 in the first rational number and multiply by 13 in the second rational number. So the first rational number is -90 upon 195 and second rational number is +91 upon 195. So the result is -90 plus 91 upon 195. So it is equal to 1 upon 195. Next, -3 by 8 -7 upon 11. The LCM is 88. So फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 88 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशनल नंबर बाई 11 एंड सेकंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 88 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई सेकंड रेशनल नंबर बाई 8. सो द फर्स्ट रेशनल नंबर इज -33 अपॉन 88 एंड द सेकंड रेशनल नंबर इज 56 अपॉन 88. So the result is the rational number of the difference of these two rational number also has the number 88 and the numerator is -33 -56. It means it is equal to -89 upon 88. यदि इसे मिक्स्ड रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें देन इट इज -1 upon 88 of this question. -2 1 by 9 -6. -2 1 by 9 can be written as -19 upon 9. -6 can be written in the form of rational number -6 upon 1. The LCM is 9. To convert second rational number into such an equivalent rational number where denominator is 9, for this purpose multiply second rational number by 9. So numerator of the resultant is -19 -54. So it is equal to -73 upon
9। यदि हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहें देन इट कैन बी रिटन एज -8 1/9। Number 3, find the product of following parts. Recall the knowledge of multiplication of two rational numbers. Suppose there are two rational numbers p by q and m by n, then the product of these two rational numbers means multiplication of these two rational numbers is also a rational number whose denominator is q into n and whose numerator is p into m. मीन्स यदि हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर होगा जिसका कि डिनोमिनेटर जो होगा वो दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा और जो न्यूमरेटर होगा वो दोनों ही रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा. नाउ यूज दिस कॉन्सेप्ट इन दीज पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. 9/2 multiplied by -7/4. So the result is numerator 9 into -7 and denominator 2 into 4. So the answer is -63/8. 3/7 multiplied by -2/5. So the numerator is equal to 3 into -2 and denominator is equal to 7 into 5, which is equal to -6/35. 3/10 multiplied by -9. -9 can be written as -9/1. So the result is 3 multiplied by -9 upon 10 into 1 means it is equal to -27/10. 3/11 multiplied by 2/5. So the result is 3 multiplied by 2 upon 11 multiplied by 5 means 6/55. -6/5 multiplied by 9/11. So result is -6 multiplied by 9 upon 5 multiplied by 11. So it is equal to -54/55. Here numerator is 3 multiplied by -5 and denominator is -5 multiplied by 3. So it is equal to -15 upon -15, which is equal to 15/15 or 1. Question number 4. Find the value of these parts of the question. This question is based on the concept of division operation. Recall your knowledge. Suppose there are two rational numbers p by q and m by n and we want to find out the solution of the problem p by q divided by m by n. Then the result is p multiplied by n upon q multiplied by m. मीन्स यदि दो रेशनल नंबर्स का हमें डिवीज़न का रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो जो रिजल्ट होगा वो होगा न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर ऑफ द
second rational number. Use this concept in these parts of the question. -4 का मतलब -4 upon 1. So the result is numerator क्या होगा? Numerator of the first rational number multiply by denominator of the second rational number upon denominator of the first rational number multiplied by numerator of the second rational number. So the answer is -12 by 2 means -6. Now use this concept in all the parts of the question. Numerator of first rational number -1 multiplied by denominator of the second rational number means 4 upon denominator of the first rational number into numerator of the second rational number 3. So it is -4 upon 24 means it is equal to -1 upon 6. -3 by 5 divided by 2 means -3 by 5 divided by 2 by 1. So the result is -3 multiplied by 1 upon 5 multiplied by 2 means it is equal to -3 by 10. -4 upon 5 divided by -3. -3 means -3 upon 1. So the result is -4 multiplied by 1 upon 5 multiplied by -3. So it is equal to -4 upon -15 which is equal to 4 upon 15. -2 upon 13 divided by 1 upon 7. So it is equal to -2 into 7 upon 13 into 1. So it is equal to -14 upon 13. That is sixth part. -7 upon 12 divided by -2 upon 13. So the result is -7 multiplied by 13 upon 12 multiplied by -2. So it is equal to -91 upon -24. So it is equal to 91 upon 24. Seventh part. 3 by 13 divided by -4 by 65. So the result is 3 multiplied by 65 upon 13 multiplied by -4. Because 65 is the multiple of 13, so we can simplify this solution here also by dividing 65 by 13 and the result is 5. So we can simplify this problem as 3 multiplied by 5 divided by -4. So it is equal to 15 upon -4 or -15 by 4. Here एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ऐसे सारे सॉल्यूशंस जहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द न्यूमरेटर, वहाँ पर आप मिक्स्ड रेशनल नंबर के भी फॉर्म में सॉल्यूशन को लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल -15 by 4 इट कैन बी रिटन एज -3 by 4. I try to cover all the concept of rational numbers in these 7 videos, including all the numerical problems of the NCERT book. If you like these videos, then please like and subscribe my channel AP Classes. From next video, I start
with the topic data handling. Thank you.